Subscribe to Jainism 101 for daily wisdom, festivals, and community. मोहक्षया ज्ञानदर्शनावरणान्तराय क्षयाच्च केवलम् बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्य तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वात् बन्धच्छेदात् तथागति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपकत लेपालाभुवत एरंड बीजवत अग्निशिखावच्च धर्मास्ति काया भावात क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे दशमोऽध्यायः। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्य मे तच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्त भासि यत्थं गणहर देवेहि गन्थियं संवं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनाणमहो वहिं शिरसा अक्षरमात्रा पदस्वरहीनं व्यञ्जनसन्धिभिवर्जितरेफं साधुभिरत्र मम क्षमितव्यं को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे। दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवैः तत्वार्थसूत्रकर्तारं गृद्धपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। जं सक्कै तं कीरै जं चणसक्कै तहेव सद्दहणं सद्दहमाणो जीवो पावैयजरामरं ठाणं तव यरणं वयधरणं संयमसरणं च जीवदयाकरणम् अन्ते समाहि मरणं चौविह दुःखं निवारे इति तत्वार्थसूत्रम् अपरनाम मोक्षशास्त्रं समाप्तम्।